गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम लोग डिक्टेशंस लिखेंगे, जो कि 3 मैटर्स होंगे। एसएससी ग्रेड सी एंड डी दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो आपको बोले जाएंगे और आपको डिक्टेशन लिखना है। देन उसमें से जो मैटर आपका सबसे अच्छा होगा उसको आपको ट्रांसक्राइब करना है। चाहे आप 80 वर्ड्स पर मिनट का ट्रांसक्राइब करिए, चाहे 100 का करिए, चाहे 120 का करिए, अकॉर्डिंग टू योर स्पीड। जो मैटर आप ढंग से लिख पाएंगे वो आपको टाइप करना है। बाकी तीनों ही मैटर्स, चारों ही मैटर्स आपको लिखने होंगे। तो फटाफट से लिंक को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और जो भी फ्रेंड्स हैं आपके उनके साथ शेयर करिए और जुड़ जाइए तुरंत। हेलो, बताइए। जो भी डाउट्स होंगे आपके पूछ लेंगे, ठीक है, कमेंट करके। कितने मार्क्स आए हैं? आंसर किसी मिलाए होंगे ना, कितने नंबर्स आए हुए हैं? एक 109 नंबर है। सो देखिए, मे बी आपको शायद ही आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाए। एससी कैटेगरी से तो बुलाया जा सकता है। तो शॉर्ट हैंड जो है वो करते रहिए, ताकि अगर एग्ज़ाम देने को मिले तो अच्छा परफॉर्म कर पाएँ उसमें। और अगर इस बार नहीं होता है तो अगली बार के लिए भी ट्राई करते रहिए, क्योंकि अगली बार आने में टाइम नहीं लगेगा। कैलेंडर आपको आ ही चुका है पहले ही, ठीक है। कहाँ पे, किस जगह पे दिक्कत हो रही है शॉर्ट हैंड में? बेसिक या फिर एडवांस में? शॉर्ट हैंड में बेसिक में दिक्कत हो रही है या फिर एडवांस में दिक्कत हो रही है? देखिए, एडवांस में दिक्कत, अगर आप बेसिक ढंग से किए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है एडवांस में, तो उसमें चिंता करने वाली ज़्यादा बात नहीं है। लगे रहिए, बस हो जाएगा, ठीक है। बस अपने करेक्शंस को डेली चेक करिए और रेगुलर डिक्टेशन लिखते रहिए। डेली कोई ना कोई मैगजीन से प्रैक्टिस करिए, 8 से 10 बार उसको लिखिए, ट्रांसक्राइब करिए। ये सारे काम करते रहेंगे तो अपने आप सीख लेंगे धीरे धीरे करके। एक दिन में नहीं आ जाता है, क्योंकि एडवांस की कोई सीमा नहीं होती ना कहाँ तक जाएगा। और मैटर का भी कोई फिक्स नहीं है कि ईजी मैटर है या फिर हार्ड मैटर है जिससे कि आप डर रहे हैं, या जो मैटर आपसे गलत हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोग डिक्टेशन लिखेंगे। देखिए, शॉर्ट हैंड के टेस्ट में डिक्टेशन कहाँ से देते हैं ये कोई कंफर्म तो नहीं है, बट हम आंकड़ा ये लगाते हैं कि पिछली बार कहाँ से मैटर आया था, ठीक है, और हमें तैयारी कहाँ से करनी है।
आपका दो तरह का एग्जाम होता है, एक ग्रुप सी का होता है, एक ग्रुप डी का होता है। ग्रुप सी में स्पीड कम होती है, मैटर थोड़ा सा हार्ड आता है। और ग्रुप डी में स्पीड कम होती है, मैटर हार्ड आता है। सी में स्पीड ज़्यादा होती है और मैटर थोड़ा सा इजी आता है। ठीक है। और जहाँ तक उम्मीद है, या तो प्रोग्रेसिव से बोला जाएगा या फिर कैलाश चंद्रा का 20 से 24 मैगजीन के बीच में से बोला जाएगा, या फिर अगर दिमाग सनक गया एसएससी वालों का तो कहीं से भी उठा के दे देंगे। किसी जंगल का मैटर उठा के दे दिए, ठीक है, किसी बच्चे की किताब से उठा के मैटर दे दिए। सो प्रिपरेशन आपको हर लेवल की करनी है। ठीक। मैटर कहाँ से आएगा ये कोई कंफर्म नहीं है, बस हाँ ये पता है कि जनरल मैटर आता है, लीगल नहीं आएगा। और इतनी प्रैक्टिस रखेंगे तो हो जाएगा। हाँ, मिनिस्ट्री से भी आता है, जुडिशरी का वर्ड नहीं आता इसमें, जुडिशरी का मैटर नहीं आता। मिनिस्ट्री से आ सकता है, जुडिशरी का नहीं आता। जैसे कि स्पीचेस वगैरह होगी, तो ये आपका ग्रुप डी में आ सकता है, सी में नहीं आता जल्दी। चलिए डिक्टेशन लिखेंगे। वॉइस इज क्लियर? देखिए, पिटमैन की बुक से जो है डिक्टेशन नहीं आती है, वो सिर्फ हाई कोर्ट में आता है। ठीक है, हाई कोर्ट में एक पैसेज दिया जाता है जब एपीएस या पीएस का पेपर होता है। तो यहाँ एसएससी में आपको पिटमैन की बुक से नहीं बोला जाएगा, बट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जितने वर्ड्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी मैटर लिखे फिर। रेडी? ठीक है, अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स हैं तो लाइव क्लास अटेंड कर लीजिए, जो पेड क्लासेस हैं उसमें आपको फेस टू फेस में क्लियर कर दूंगा। बाकी डाउट्स मैं अभी डिक्टेशन के बाद बताऊंगा। रेडी? स्टार्ट। As far as I understand, there have been many agricultural exhibitions in this country in the past, but this is the largest of all those so far held. Agriculture is the foundation of our economy and of our whole life. If I may say so, Sardar Patel had once put it in his own manner by saying, when he was asked about culture, he said, I know only one culture, and that is agriculture. That was significant. In one sentence, he explained many things because our whole culture has been built up around agriculture, if I may say so. And it is from the soil that many things have come. Most of the things that have enriched the world have come from the soil, and the present have
the greatest priority for the development of this country. Even today, even though many of the peasants, particularly the smaller ones who form the bulk, are not educated, but they still show in their lives the deep culture that they have inherited from the holy past as against others. And it is they who are the backbone of this country, in my view. It is therefore that we have decided to give the highest priority to agriculture and to grow industries and cottage industries so that we develop this country in consonance with its great culture and enrich the lives of the people in all ways. That does not mean that we are neglecting heavy or medium industries. They have their own place. They are also required for agriculture too, but they will not be there, many of them, if agriculture is not there, because it is agricultural produce on which many of these depend, and unless agriculture is enriched, production is increased, productivity is increased, it is no use talking of prosperity in this land. Whatever may be the case in other countries, this country has a rural civilization and not an urban one. But the urban civilization seems to be absorbing and wrecking the rural civilization completely. It is that which we are trying to reverse so that both urban areas and the rural areas get enriched. If the rural areas are enriched, urban areas are bound to be all right. But if only the urban areas get prominence, then rural areas get improvised in every way. This is why the importance of this exhibition is of great importance. We have natural resources of almost all kinds, and we have got to see that we use them, not exploit them as people say. We are against all exploitations. When the natural resources are exploited, they get depleted, and God knows what happens afterwards, and that is what is happening today. But if they are properly used, they can be used permanently in a proper manner, and they can be utilized to the best advantage of human society. It is therefore that we have to see that productivity in agriculture increased to the maximum. We can produce 3 times the agricultural produce that we are producing today. That is the capacity of our land. We have got to harness the various instruments of increasing that productivity, and that also can be done. We do not lack
intelligence, but we are not coordinating the intelligence that we possess, nor are we using it with courage, and that is what has got to be revived and brought back in the life of our people, and that also can come more through agriculture than anything else. This exhibition therefore provides knowledge of all kinds of agricultural processes and activities, how we are growing good and how this can increase. It also provides education and how agricultural produce is utilized and how industries also depend on it and how industries benefit agriculture. It also gives proper exhibition of khadi and other cottage industries, which can be the backbone of our economy and of our development as it ought to be. All these things are brought out very well in this exhibition. I hope and trust that those who come here and visit this exhibition will take necessary time to go through all the pavilions so that a whole picture is before them. I would also like to see and suggest to the Commerce Ministry and Agriculture Ministry that many things in this exhibition can be kept in every state for a permanent exhibition so that perpetually people go on looking at them and have the benefit of this exhibition in that manner, and we can go on adding to it from time to time whatever new things we want to expose to the public. This may be considered. As a matter of fact, I'm also thinking of having a museum in this country of all the states, showing the best that every state's art, culture, music, science, ancient monuments, so that everybody can have an idea of this country at one place. Then I also think we will have a legitimate pride in the country to make the world happy and prosperous. Full stop. लिख ले मैटर या छोटा किसी का? The finest stories in Hindi. हाँ, तो जो वर्ड्स मिस हुए हैं उसको क्लास के बाद रेक्टिफाई जरूर से करेंगे, ठीक है? स्पीड तो ज़्यादा नहीं लगी थी.
देखिए 840 वर्ड का मैटर आपको इसीलिए बोला गया ताकि थोड़ा सा हैबिट आपकी बनती रहे, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है उस तरह से। अभी तो थोड़ा सा सस्पेंस है ना, पेपर कब होगा आपका, कितना टाइम आपको मिलेगा, बट सस्पेंस को छोड़ दीजिए और जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद तो आपको एक फिक्स टाइम के साथ नई स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी कि अब आपको तैयारी कैसे करनी है, कितने दिन बचे हुए हैं और उस डेज में आपको किस तरह से खुद को प्रिपेयर करना है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, और आप पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। बहुत लोग होप खो देते हैं अपना कि नहीं हमसे नहीं निकल पाएगा। जिनको भी पेड क्लासेस करनी है, जो लोग फीस पूछ रहे हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर क्लासेस आपको करनी है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस बैचेस हमेशा चलती रहती एंड नई बैच अभी स्टार्ट होने वाली है, मे बी 20 से स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो फिर 1 फेब से स्टार्ट होगी। चलिए एक 100 का मैटर बोलूँगा मैं, उसको भी लिखेंगे और ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तैयार हैं सभी लोग, बोला जाए। क्लास का टाइम थोड़ा सा पहले इसलिए किया है, बहुत लोग खाना पीना खा के बैठते हैं ना, तो खाने पीने के बाद पढ़ाई नहीं होती है, पहले पढ़िए बाद में खाना खाइएगा। चलिए देखिए, रेडी, स्टार्ट। ऑब्जर्व नेशनल Solidarity Day. It was exactly 2 years ago that our northern borders were attacked. This was surprise sprung on us quite suddenly. But in that hour of peril, we saw an upsurge of patriotic feeling throughout the country. Differences of state, caste, creed, or language, which had often seemed superficially to divide us, disappeared in a moment. It was a visible demonstration of the fundamental unity of our people, which has preserved the integrity of India through the ages. The farmer in the field, the worker in the factory, and indeed people from all walks of life came forward to make their own contribution in order to defend the country's freedom. On the borders, our soldiers fought with valor and with determination. So many of them made the supreme sacrifice and gave their lives so that the country might live. The whole nation remembers them with feelings of admiration and gratitude. We have, however, to remember that we should not be satisfied with what happened in the past.
we have to realize that preservation of the freedom and territorial integrity of the motherland calls for incessant effort, vigilance, and alertness. The problems that we face today are serious indeed. The Chinese are trying to build up a mighty war machine and to create fear in the minds of all. China has gone a step further and has recently exploded an atomic bomb. We are thus confronted with the nuclear bombs in Asia, something new for this peace loving continent. These are serious developments and we must take due notice of them. Even otherwise, in recent days, we have seen events of greater significance taking place in other parts of the world. Within the country, we are going through a period of difficulties. The production of food is still inadequate. Harvesting of rice has begun and the new paddy and rice will be coming into the market. This will ease the situation in respect of rice for the present. The farmers are aware that the government is very particular that they should get reasonable and remunerative prices for their paddy. I hope they are aware of the fact that the producer's price have already been fixed and announced. It is therefore not unreasonable to expect that the Kisans will come forward to sell their paddy for rice to the government as fixed prices also. The showing of Rabi crop will soon start. Let us try to produce much more of wheat than we did in the year 1982, which was a normal year. It is essential that the district administration should help in the supply of adequate seeds, manure, and similar other facilities. Water for irrigation purposes is the most important item. The problem of water logging has greatly increased in recent years. Every effort should be made to see that areas liable to waterlogging are provided with necessary drains. Besides major irrigation projects, minor and medium schemes should also be taken in hand. All tanks and ponds should be deepened. I am told that the construction of tube wells sometimes diverts attention from the existing irrigation works and even leads to avoidable duplication. It should always be borne in mind that new investment in tube wells should not make the older investment infructuous, nor should it result in the neglect of the existing works. These are some of the reasons why the irrigated area in a number of states has not appreciably increased in spite of considerable investment. The district administration has to be much more alert and active to give all encouragement and assistance to the Kisans with a view to increasing the production of their Rabi crop. While wheat is important, there must be greater production
of pulses also. The shortage of pulses has considerably added to our present difficulties. I know we all understand and fully realize that the solution of all our present day food difficulties lies in increased production. It is therefore essential that government officials in the districts and other at the state or central level, as also the farmers, should work hand in hand to produce a much better result. Let us show to the country that we can tackle our problem effectively by our own efforts and perseverance. The question of distribution has also assumed great importance. The cooperatives and the fair price shops have helped to a considerable extent in the present situation. With improved methods and with more effective supervision, they can do still better. Moreover, if consumer cooperatives can be organized by local initiative, they can be of much assistance in ensuring supplies to the consumers at steady price. I am sorry to say that grain dealers do not seem to have fully realized the gravity of the situation. This has led me to serious thinking, and the government must make some racial changes in the present system of distribution. So, some days ago, I had the honor of presenting to the House the report of the Planning Commission on the second 5-year plan. I presume that many members have read it since then, either fully or in parts. I have now the honor to move the following resolution. This House records its general approval of the principles, objectives, and programs of development contained in the second 5-year plan as prepared by the Planning Commission. First up. लिख ले मैडम। लिख पाए नहीं लिख पाए वाला। और आप लोग क्लास करने के बाद फीडबैक थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में दे दिया करिए, ठीक है? नहीं देते हैं। देखिए रिद्धि, डिफिकल्ट वर्ड्स कहते किसको हैं? पहली चीज की क्लास में जो आप मैटर लिख रहे हैं
जो गलत हो रहा है वो आपको क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। जैसे एक वर्ड आपसे नहीं बना तो तुरंत आपको बता दिया गया उसकी आउटलाइन कैसे बनेगी, दोबारा आपसे गलती ना हो। और बाकी प्रैक्टिस आपका होमवर्क में होता है, ठीक है। जैसे आपने ये पैसेज अभी किया, जितने वर्ड्स आपसे मिस हुए हैं या जो जो आपने मिस्टेक्स किए हैं वो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, चाहे वो छोटा वर्ड हो चाहे वो बड़ा वर्ड हो, और आपको प्रैक्टिस उसी की करनी है, ठीक है। ये समझ लीजिए बस कि एग्ज़ाम क्लियर कराना हमारी जिम्मेदारी है, और जो लोग भी क्लास कर रहे हैं बाय हुक और बाय क्रोक, एग्ज़ाम उनका क्लियर होना चाहिए। कैसे होगा वो मेरा काम है, वो आपका काम है। जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं वो आपको फॉलो करने हैं बस। होमवर्क करने में कोई भी कमी नहीं रहे, बस इतना ध्यान रखिए कि काम जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आँख बंद करके प्रैक्टिस नहीं करनी है, आँख खोल के करनी है। जो जो गलतियाँ हो रही है उसको करेक्शन करना है, रेगुलर ये काम करना है, और जो जो गलतियाँ आप लोग करते हैं वो आपको क्लास में बताया जाएगा। और आपके कंफर्ट जोन से बाहर के मैटर्स बोले जाते हैं, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हों, क्योंकि सही रास्ते पे चलने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं आपको, है ना। और इस बार भी सिलेक्शंस होंगे, जितने लोग पढ़ रहे हैं उसमें से 90% सिलेक्शंस होने हैं, जिनका भी रिटर्न निकला हुआ है 90% लड़के सेलेक्ट होंगे उसमें से, और ये रिजल्ट बताएगा। कंडीशन सबकी इसी तरह से बहुत अच्छी नहीं है। जो लोग पिछली बार रह गए थे या किन्हीं कारणों की वजह से, उनका इस बार निकलेगा। एक मैटर और लिखना है आप लोगों को 120 का, नहीं लिखेंगे? चलिए फिर लिखिए मैटर। जो भी डाउट्स होंगे कमेंट कर देंगे, मैटर बाद में क्लियर करूंगा। रेडी? स्टार्ट। Mr. Speaker, sir, you have been pleased to say many generous things about the members of this House, and to my great embarrassment about me. I should like to offer you my grateful thanks, and I'm sure I speak on behalf of the House also when I offer you their thanks for your kind words. It is befitting that on this occasion, when this Parliament stands at the edge of its own dissolution, there should be some valedictory references to our past, since you have been good enough to make a reference to the work of this Parliament. I am taking the liberty of also saying a few words. We have gone through during these 5 years a tremendous amount of work, and as you have said, the speeches have covered I do not know how many millions of pages. Questions have also been asked, and altogether a vast quantity of paper has been consumed. Yet, the historian of the future will probably not pay too much attention to the number of speeches or the hours which the speeches have taken, or to the number of questions, but rather to the deeper things that go towards the making of a nation. Here, we have sat in this parliament the sovereign authority of India, responsible for the country's governance. Surely, there can be no higher responsibility or greater privilege than to be a member of this sovereign body.
which is responsible for the fate of the vast number of human beings who live in this country. All of us, if not always, at any rate, from time to time must have felt this high sense of responsibility and destiny to which we had been called. Whatever we were worthy of it or not is another matter. During these 5 years, we have not only functioned on the edge of history but sometimes plugged into the processes of making history. We have lived here, as indeed people have lived all over the world, at a moment of greater change and a transition of fast upsets and revolutionary processes. Not only have we been part of that world drama, but we have had our own drama also. It would be interesting for someone to take a rather distant view of the drama of these 5 years and more, not being lost in the innumerable confusing details but seeing their broad current of history. Full stop. लिख लिया मैटर? कमेंट करके बताइए कौन कौन लिखा है. स्पीड आपकी 125 के अराउंड थी. अब जो भी डाउट्स हों, जिनके जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हों, वो पूछ सकते हैं. तो आज आप लोगों को कितने वर्ड्स का मैटर बोला गया? 2100 है ना. 21 वर्ड्स आपने लिखे हैं. 90% लिख लें, अच्छी बात है. और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे न छूटे मैटर. जब बहुत ज़्यादा तेज मैटर हो और कुछ हार्ड वर्ड्स आ जाएं तो हम उसको मिस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से बाकी वर्ड्स आपके नहीं छूटने चाहिए हार्ड वर्ड्स की वजह से. क्योंकि देखिए, नंबर सेम मिलता है, चाहे हार्ड वर्ड हो, चाहे ग्रामलॉग हो, चाहे जो हो, सबका एक ही नंबर आपका कटना है. ठीक है, मतलब एक वर्ड अगर गलत हुआ तो उतना ही बड़ा वर्ड है, चाहे कोई छोटा वर्ड है, नंबर सेम कटेगा. इसलिए ज़्यादा बड़े वर्ड्स के चक्कर में ना पड़े. स्लो स्पीड पे कोशिश करेंगे, बनेगा. बट बहुत ज़्यादा अगर स्पीड फास्ट हो तो सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करके आगे बढ़ जाएंगे. और क्लास में अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे तो आपको बनाने की कोशिश करनी है, वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करना है सर. ठीक है, और कोई डाउट है किसी का? इसमें लीगल का कोई है स्टूडेंट जो भी वीडियोस देख रहे हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का?
चलिए एक लीगल मैटर लिखेंगे, छोटा सा ही बोलेंगे, 200 वर्ड का। रेडी? स्टार्ट। Learned counsel for the appellants argued his case and submissions were made by him. We may make it clear at the outset that none of the appellants belonged to the category of either SC/ST, ex-servicemen, and their claim is also not against these categories. Hence, we consider it necessary to consider the validity of selection of the candidates made in these two categories. In other words, we confine our consideration to the validity of selection of the candidates made in the general category. Mainly, the submissions made on behalf of the appellants were that after declaration of the result of the written examination on 1/4/1998, standard could not have been lowered for making other 40 candidates eligible for the purpose of interview. Criteria could not have been framed after declaration of result of the written examination. Maximum 21 candidates could have been called for interview in the ratio of 1:3 in the general category on the basis of the merit of the written examination, whereas out of 78 candidates whose result was declared on 1/4/1998, more than 60 candidates were from the general category. Full stop. लिख लिया? आपको मैंने भी एक लिंक शेयर किया है। इस लिंक पे ये व्हाट्सएप चैनल की लिंक है और इस पे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी लोग हैं, जैसे कि क्लास के नोटिफिकेशन हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट मैटर हो। जैसे आज आपने जो मैटर्स लिखे हैं वो आपको मिल जाएगा, तो ज़्यादा ईजिली वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में उतना समझ में नहीं आता, सो वहाँ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा और आने वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएंगे। सो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और क्लास के बाद फीडबैक जरूर से देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, कि कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है आप लोगों की। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं है किसी का? क्लास ओवर की जाए। ओके, क्लासेस हो, मिलते हैं आपको कल सेम टाइम पे।